Good morning, everyone. In this video, I'll be talking about the Constitution of Criminal Court and Offices, and it is covered under Section 6 to 25 of the CrPC. Okay, so moving on to our first topic in this video, that is classes of criminal codes. Classes of criminal codes आपका Section 6 CrPC में mentioned है. ये आपको different classes of codes के बारे में बताता है जो CrPC में given है. For example, Section 6 कहता है कि besides the high courts and the courts constituted under any other law, हाई कोर्ट और कोई भी ऐसा कोर्ट जो कॉन्स्टिट्यूटेड है किसी और लॉ में, उसके अलावा देयर शैल बी द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स. तो एरिया की बात करें तो दो तरीके के एरियाज होते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया एंड अदर एरियाज. तो अगर हम मेट्रोपॉलिटन एरियाज की बात करेंगे तो आप अपने पीपीटी में देखिए. Under metropolitan area, you have first the High Court, then you have Court of Session, Metropolitan Magistrate, JM second class, and Executive Magistrates. While if I talk about other areas, you have High Court, you have Court of Session, JM first, JM 2, and Executive Magistrates. Now you must be wondering the difference between JM and EM, that is Judicial Magistrate and Executive Magistrate. See, if we see in this section, executive magistrate is a separate category that is, quite distinct from the courts of judicial magistrates. Now, JM are basically under the control of High Court, whereas the executive magistrates are under the control of state government. While if we talk about another set of differentiation between the two, when I talk about judicial magistrates, they are performing judicial functions, functions that are judicial in nature, while executive magistrates are performing functions that are administrative in nature. Okay, so after section 6, we'll be discussing the different classes of courts that are mentioned under CrPC. सबसे पहले, the most important section that is to be discussed is section 9, Court of Session. Okay, अभी Court of Session के बारे में complete details आपको section 9 में mentioned है. हम वो एक एक करके important details discuss करेंगे. First fact, it is the duty of the state to establish a court of session for every session division. तो यहाँ पे स्टेट की ड्यूटी है कि वो एक कोर्ट ऑफ सेशन एस्टैब्लिश करेगी हर सेशन डिवीजन में. सेकंड, जो जजेस की अपॉइंटमेंट है कोर्ट ऑफ सेशन में, दैट विल बी डन बाय द हाई कोर्ट ऑफ द कंसर्न स्टेट. अब थर्ड पॉइंट की बात करें, हाई कोर्ट के पास एक्स्ट्रा पावर भी है कि वो अपॉइंट कर सकता है एक एडिशनल सेशन जज या फिर असिस्टेंट सेशन जज जो कि एक्सरसाइज कर सके जुरिसडिक्शन एक कोर्ट ऑफ सेशन में. ओके, so High Court has the power to appoint the additional session judge and assistant session judge to exercise jurisdiction in the court of session. Okay, for example, अगर office of the session judge is vacant, for a particular reason, so High Court can make arrangements for disposal of any urgent applications or any pending application that is before the court of session by the additional session judge or the assistant session judge. If there is no additional assistant session judge for a second, then the chief judicial magistrate is going to take care of that. Okay, और इसमें एक और पॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोर्ट ऑफ सेशन यूजुअली हाई कोर्ट इज will decide the place of the sitting of the court of session, but if it is for the convenience of the parties, for some convenience, then the court of session can be shifted to that particular place to dispose of the case. Okay, and it will be the opinion will be taken from the parties on it. Okay, moving on to section 11, Court of Judicial Magistrates. आपने judicial magistrates, metropolitan magistrates टर्म है जो आपने बहुत बार सुनी है. मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट हम मेट्रोपॉलिटन एरियाज में यूज करते हैं, जेएम हम अदर एरियाज में यूज करते हैं. ओके, जब हम जेएम की बात करते हैं, जेएम प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ओके, तो सेक्शन 11 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. जब मैं कोर्ट ऑफ जेएम की बात करती हूँ, हमें समझना है कि हर नॉन मेट्रोपॉलिटन एरिया में जो स्टेट गवर्नमेंट है वो हाई कोर्ट से कंसल्टेशन के बाद इस्टेब्लिश कर सकती है कोर्ट्स जेएम फर्स्ट के या फिर जेएम सेकंड क्लास के एज रिक्वायर्ड. ओके, इसी में सेकंड पॉइंट ये है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो डिटरमाइन कर सकती है कितने नंबर ऑफ कोर्ट्स होंगे और उन कोर्ट्स की लोकेशन क्या होगी, वो भी स्टेट गवर्नमेंट ही डिटरमाइन करेगा. इन सभी सेक्शंस में ना आपको एक चीज याद रखनी है, अगर आप एक कॉमन चीज फिगर आउट करो, जो कोर्ट्स हैं
वो इस्टेब्लिश स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स है जो भी उस कोर्ट में बैठेंगे जो ऑफिसर्स, उनकी सिलेक्शन इज डन बाय द हाई कोर्ट. ओके, सो दीज आर द domains, the different functions that are performed by each. क्लास सेक्शन 12 की जब हम बात करते हैं तो 12 हमें सीजेएम दैट इज चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की बात करता है. जब आप एडिशनल बोल रहे हो दैट मीन्स सम एक्स्ट्रा लोड विल बी देयर, यू नो. तो उस लोड को डिवाइड करने के लिए, उस लोड को फर्दर बेटर तरीके से एलोकेट करने के लिए एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स भी होते हैं. तो अब सेक्शन 12 क्या कहता है? सेक्शन 12 कहता है कि हर डिस्ट्रिक्ट में अदर देन मेट्रोपॉलिटन एरियाज there shall be judicial magistrate of the first class and he shall be appointed as chief judicial magistrate. Chief judicial magistrate is above the judicial magistrate और judicial magistrates में से ही एक chief judicial magistrate बनता है, you know. So high court is basically empowered to designate the JM of first class as additional CJM and CJM, and by such designation the magistrate shall be empowered to exercise all or any of the powers of a CJM. That simply means कि high court के पास पावर है कि वो एडिशनल सीजीएम्स भी बना सकते हैं, और अगर हम बोल रहे हैं एडिशनल सीजीएम तो उनके पास इतनी पावर होगी कि वो सीजीएम के फंक्शंस परफॉर्म कर सके बिकॉज दे आर एडिशनल. ओके, अब अगर सपोज सब डिवीजन की बात करते हैं तो सब डिवीजन में वो कह रहे हैं कि द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास मे बी डेजिग्नेटेड एज सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट. ओके, तो डेजिग्नेशन यहाँ पे चेंज हो गया अगर वो सब डिवीजन में एक्ट करते हैं. Such magistrates, matlab that means the subdivisional judicial magistrates, they shall be subordinate to the CJM and will thus work under their control. Okay, तो वो CJM के control में function करेंगे and the subdivisional judicial magistrate basically should control and supervise the work of the JMs except the additional JMs in that subdivision. Okay, so under section 13 they are creating another class that is special judicial magistrates. अब जब हम बात करें special judicial magistrates तो basically कुछ special matters के लिए, कुछ any class और any particular class of cases के लिए ये magistrates बनाए जाते हैं. अब अगर further आगे देखें section में तो इनके क्या basically qualifications हैं, कौन लोग हैं जो special judicial magistrates बन सकते हैं, उसके बारे में बात करी गई है. जैसे अगर आप slide देखें, इसमें लिखा है the person to be appointed as a special magistrate must be either person in government service, या तो वो government service में होंगे या फिर वो जो government service से retire हो चुके हैं, and the appointment is to be made by high court. आप यहाँ पे फिर से repetition देखोगे, appointment is done by the high court. Okay, court बना रही है state government लेकिन appointment is done by the high court. Okay, the person to be appointed as special magistrate must have the qualifications and experience as prescribed by the high court. जो भी qualification और experience high court prescribe करेगी वो इस court के लिए applicable होगा. And the person on whom the powers of JM or MM have been conferred, you know, they are to be the special judicial magistrates or the special metropolitan magistrates. मैंने आपको बताया था अगर metropolitan area है तो it is special MM, otherwise it is स्पेशल जेएम. ओके, और इनकी जो अपॉइंटमेंट होगी, क्योंकि ये पर्टिकुलर केसेस या क्लासेस ऑफ केसेस के लिए हैं, तो इनकी अपॉइंटमेंट एक टाइम में 1 साल तक ही करी जाएगी. ओके, तो 1 ईयर तक देयर अपॉइंटमेंट विल बी डन एट वन टाइम. ओके, जब हम सेक्शन 14 की बात करते हैं तो वो हमें बताता है लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स. कौन से एरिया में क्या जुरिस्डिक्शन होगी जिसमें वो अपनी पावर एक्सरसाइज करेगा. तो ये कौन डिटरमाइन करता है कि हमारी स्लाइड में मेंशन्ड है कि जो सीजेएम होते हैं दे बेसिकली दे हैव टू डिफाइन द लोकल लिमिट्स ऑफ द एरिया within which the JM may exercise all or any of the powers that have been given to them under the CrPC. Okay, तो अगर CJM ने डिफाइन करा है तो उतनी jurisdiction. अगर if the jurisdiction and the powers of JM are not defined by the CJM नहीं define कर रहा है, then the jurisdiction and powers of JM shall extend throughout the district. Okay, पूरे district में उनकी power apply करेगी. सेक्शन 15 में आपको सबऑर्डिनेशन की बात करिए. बेसिकली यहाँ पे थोड़ी सी हायरार्की भी बताई गई है, और स्टार्टिंग विद द सेक्शन दे आर सेइंग दैट सीजीएम इज सबऑर्डिनेट टू द सेशन जज. ओके, सो दैट मींस सेशन जज ऊपर होंगे, उनके नीचे सीजीएम. ओके, एंड एवरी अदर जेएम शैल सब्जेक्ट टू जनरल कंट्रोल ऑफ सेशन जज. तो
थ्रू आउट जनरल कंट्रोल तो सेशन जज का रहेगा, पर जितने भी जेएम्स होंगे दे विल बी सबऑर्डिनेट टू द सीजीएम. सो इस पॉइंट में क्या कहा गया है, सेशन जज, then you have CGMs, then you have GM. Okay, this is the chain. Now जब हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केसेस की जेएम्स के बीच में, तो द सीजीएम may make rules or give orders regarding the distribution of business among the judicial magistrates subordinate to him consistent with this code. Okay, so इस कोड को ध्यान में रखते हुए जो सीजीएम्स हैं वो बेसिकली जहाँ पे वर्ड हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस, वो कह रहे हैं कि what all classes of cases, what all the different category of cases will be allocated to the JMs. This task is given to the Chief Judicial Magistrates. Okay. Section 16 is talking about courts of metropolitan magistrates. इससे पहले हम JM की बात कर रहे थे, तो that means other areas. जब हम metropolitan area में हैं, तो वहाँ पे metropolitan magistrates होंगे. Okay. So here it is given that it shall be the duty of the state government. State government की ड्यूटी होगी to make the sufficient number of metropolitan courts in the metropolitan area after due consultation with the High Court. Okay, so High Court के साथ discussion के बाद they will make the sufficient number of courts in the metropolitan area, and again there's a repetition that the presiding officer will be appointed by the High Court, and the jurisdiction and power of the MM, that is Metropolitan Magistrate, will extend throughout the metropolitan area. Okay. सेक्शन 17 हमें चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट एंड एडिशनल मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट्स के बारे में बता रहा है. जैसे हमने एडिशनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स की बात करी थी, एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स के बारे में बात करी थी, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स के बारे में बात करी थी. सेक्शन 17 हमें सीएमएम और एडिशनल मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट्स के बारे में बता रहा है. ओके. Now, when we talk about this section, we're going to read it. The High Court may appoint any MM to be the CMM. अब आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि जो JMs हैं या Metropolitan Magistrates हैं, उन्हीं में से ही एक आगे further CMM या फिर Chief Judicial Magistrate बनता है after the promotion for such metropolitan area within the local limits of such High Court. Okay. The High Court may appoint any MM. हाई कोर्ट अपॉइंट कर सकता है any MM to be the additional chief metropolitan magistrate, and such magistrates shall have all the powers conferred upon a CMM under this code. Okay, जो भी magistrate आपका additional chief metropolitan magistrate बनेगा, उनके पास सारी वो powers होंगी जो chief metropolitan magistrate को दी गई है. मैंने आपको additional का purpose पिछली slides में भी mention करा था. Okay, section 18 is talking about the special judicial magistrates. Okay, now the central or the state government can request the High Court to confer all or any of the powers that are given to the GM of the first class or the second class upon any person who holds or has held any post under the government to adjudicate a particular case or particular classes of case in any local area other than a M. Okay. सो बेसिकली सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट कर सकती है हाई कोर्ट को कि आप JM1 या JM2 की सभी पावर्स एक पर्टिकुलर ऑफिशियल को हैंड ओवर कर दे, एंड ही विल बी डीलिंग विद अ पर्टिकुलर क्लास और क्लास ऑफ केसेस. ओके, सो दैट पर्सन टू बी अपॉइंटेड इज विल बी अ JM and he must have held or holds any post under the government, or that person will be appointed by the High Court. एंड मैंने आपको पहले भी पिछली साइड्स में भी डिस्कस करा था द अपॉइंटमेंट ऑफ द स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट. ओके, पहले MM था, यहाँ पे JM है. इट शैल बी डन फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 year एट अ टाइम. तो एक साल के लिए एक टाइम पे किया जाएगा. ओके. सेक्शन 19 में सबऑर्डिनेशन ऑफ MMs की बात करी जा रही है. पीछे हमने JMs की बात करी थी. जब हम सबऑर्डिनेशन देखते हैं क्या हायरार्की है, तो द CM एंड एडिशनल Chief Metropolitan Magistrate shall be subordinate to the Session Judge. Okay, तो Session Judge के नीचे होंगे Chief Metropolitan Magistrate and Additional Chief Metropolitan Magistrate. Every MM, हर Metropolitan Magistrate will be subordinate to the Chief Metropolitan Magistrate, subject to the general control of Session Judge. General control Session Judge का होगा, but जो भी Metropolitan Magistrates हैं वो subordinate होंगे CJMs के. So that automatically means that Session Judge, Chief Metropolitan Magistrate and then MMs. Okay. अब यहाँ पे भी
एमएम्स के लिए जो डिवीजन होगी केसेस की, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट्स. उनके वर्क की एलोकेशन विल बी डन बाय सीएमएम. Okay, when we talk about section 20, that is executive magistrates. It's a totally different class of magistrates. Okay, ये इनकी reporting is मतलब they are basically under state government, not under the high court. तो it is the duty of the state. यहाँ पे state की responsibility है to appoint as many EMs as a deems fit. जैसा state को ठीक लगे उतने number of executive magistrates बनाए जाएंगे और उन सभी executive magistrates में से कोई एक होगा district magistrate. Okay. Now the state government may also appoint additional EMs, right? जैसे पहले हमने देखा judicial side में there are different additional judicial magistrates. यहाँ पे भी executive magistrates भी additional हो सकते हैं जिनके पास powers हैं और they have the powers of the district magistrate conferred upon him by this court. जो court powers देता है वो सारे इनके पास होंगे. Okay, and the state government can place an EM in the in charge of a substation. अब substation में भी state government एक EM को in charge बना सकती है, and that EM will be called as subdivisional magistrate. जो भी EM उस substation में in charge होगा उसको subdivisional magistrate बोलते हैं. The state government also has the power to relieve him of the charge of executive magistrate as occasion requires, right? तो जो उसकी original position थी उसकी powers मैजिस्ट्रेट की होल्ड हो सकती हैं और जो न्यू चार्ज है सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट का वो पावर्स कंटिन्यू कर सकते हैं. ओके, सो दे मे रिलीव हिम ऑफ द ओरिजिनल ड्यूटीज and he may continue with this duty of the subdivisional magistrate. Okay, in this particular slide I am discussing three sections, section 21, 22, 23. ये executive magistrate से deal कर रहे हैं. अब सबसे पहला जो हम डिस्कशन करेंगे वो है स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट. इट इज मेंशन अंडर सेक्शन 21. जैसे हमने जेएम्स देखे, एमएम्स देखे, वैसे ही एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स की भी क्लास में एक स्पेशल ईएम एलोकेट हो सकता है जो पर्टिकुलर सेट ऑफ cases से डील करे. नाउ द स्टेट गवर्नमेंट कैन अपॉइंट अ स्पेशल ईएम फॉर अ टर्म एज इट थिंक्स फिट. This section confers power. ये section आपको basically power दे रहा है on the state government to appoint special EMs for a particular area or for a particular function. That means किसी area या किसी particular function को perform करने के लिए state government power दे सकती है to appoint special EMs. Now the state government can confer power of the EMs on special EMs. Okay, तो EMs की power special EMs को भी दी जा सकती है जैसा state government को ठीक लगे as a deems fit. Okay. Section 22. Local jurisdiction. EMs की power कहाँ पर है? What is the jurisdiction where they will be exercising their powers? So basically it is the duty of DM. यहाँ पे district magistrate जो है उनकी duty आ जाती है to define the local limits of the area within which the EM is basically exercising his functions. Now the EM has jurisdiction over the entire district unless his power has been restricted to a certain local area. जब तक उनकी पावर एक लोकल एरिया पे रिस्ट्रिक्ट नहीं करी गई है तब तक उन ईएम्स की पावर पूरे डिस्ट्रिक्ट पर है. ओके, जब तक कि रिस्ट्रिक्ट ना करी जाए. ओके, सेक्शन 23 इज टॉकिंग अबाउट सबऑर्डिनेशन ऑफ ईएम्स. जैसे हमने जेएम्स की सबऑर्डिनेशन देखी, एमएम्स की सबऑर्डिनेशन हायरार्की देखी, उसी तरीके से ईएम्स की भी है. इसके बारे में स्टडी करते हैं. ऑल ईएम्स शैल बी सबऑर्डिनेटेड टू डीएम. ओके, तो ये हायरार्की से हमें क्या समझ आ रहा है? डीएम, ईएम, and every EM exercising a power in a subdivision shall be subordinate to the special divisional magistrate. Okay. However, the general control shall be there of the DM. DM का ही general control रहेगा. Okay. और जो DM है यहाँ पे वो time to time allocate कर सकते हैं business. Okay. To the different EMs that are subordinate. Okay, coming to the last slide, here we'll be discussing a very important functionary under CrPC. This functionary is called public prosecutor and assistant public prosecutors. इसको समझना बहुत ज़रूरी है. Okay, जब हम public prosecutor की बात करते हैं आपको याद रखना है ये section 24 में covered है. Public prosecutor के बारे में जब हम बात करें, देखो it is the duty of central government or the state government to appoint a public prosecutor. तो ये ड्यूटी किसको दी गई है? सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को. नाउ करंट ड्यूटी के अलावा दे हैव अनदर सेट ऑफ ड्यूटी. दे कैन आल्सो अपॉइंट वन और मोर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स. कहाँ के लिए? फॉर हाई कोर्ट,
and for conducting the prosecution, the appeals or other proceedings on behalf of the government. तो ये किसके behalf पे कर रहे हैं? Government के behalf पे कर रहे हैं. The state government shall also appoint public prosecutors for every district. Okay, जैसे ऊपर हर हाई कोर्ट के लिए हुआ है, यहाँ पे नीचे they are giving that they may appoint for a particular district. Now it is the duty of the public prosecutor to conduct cases or classes of cases on behalf of state government. तो स्टेट गवर्नमेंट के behalf पे एक्ट कर रहे हैं. ओके, so they will be dealing with particular cases or classes of cases. Okay, अब एक पैनल प्रिपेयर होता है public prosecutors का. Okay, that panel is basically they have a panel of names. It is to be prepared by the district magistrate. और DM किनके साथ कंसल्ट करेगा? सेशन जज के साथ कंसल्ट करेगा. Okay, so they will be consulting the session judge, and people who will be deemed fit will be appointed as the public prosecutors or the assistant public prosecutors. Okay, अब कितना year of experience होना चाहिए public prosecutor होने के लिए? For appointment of a public prosecutor or additional public prosecutor, a person must have completed 7 years of practice as an advocate. आपकी 7 years of practice as an advocate complete होनी चाहिए अगर आप public prosecutor बने. ओके, 25 असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात कर रहा है. दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट एडिशनल बट असिस्टेंट. एडिशनल की बात ऑलरेडी 24 में हो चुकी है. स्टेट गवर्नमेंट मे अपॉइंट वन और मोर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स. ओके, फॉर कंडक्टिंग द प्रोसिक्यूशन इन द कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट्स. तो कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट्स में डील करने के लिए दे विल बी अपॉइंटिंग द असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स. ओके, नाउ नो पुलिस ऑफिसर कैन बी अपॉइंटेड. कोई भी पुलिस ऑफिसर एक असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं बन सकता एक्सेप्ट दिस इज एन एक्सेप्शन गिवन दैट इज गिवन इन द सेक्शन इटसेल्फ अंडर सबसेक्शन 3. ओके, नाउ अगर एपीपी अनअवेलेबल है किसी पर्टिकुलर केस के लिए, तो जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है he may appoint any other person to be an APP in this case. Okay, another point, the DM shall not appoint any police officer. जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है वो किसी पुलिस ऑफिसर को नहीं अपॉइंट करेंगे. आपको दी हुई है ना कुछ एक्सेप्शन दी हुई है, तो उस एक्सेप्शन को ही यहाँ पे ग्रेटर एक्सटेंट में डील करा जा रहा है कि जो डीएम है वो किसी किसी पुलिस ऑफिसर को नहीं अपॉइंट करेंगे एज एपीपी इफ he has taken part in the investigation into the offense with respect to which the accused is being prosecuted. जिस ऑफेंस के लिए प्रोसिक्यूट किया जा रहा है अक्यूज को, अगर उसी ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन में वो पुलिस ऑफिसर पार्ट ले चुके हैं तो उनको नहीं बनाया जाएगा एपीपी. एंड अगर वो बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर है तो भी नहीं बनाया जाएगा. ओके, सो यहाँ पे वी हैव कवर्ड all the different classes of courts, and we have also covered a very important functionary under CrPC, that is public prosecutor and assistant public prosecutors. I'll be dealing with the other topic in the next set of videos. Thank you everyone.